Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll solve question 2 and question 4 from exercise 17C of chapter circles. So let's start with question number 2. In a cyclic trapezium, the non-parallel sides are equal and the diagonals are also equal. Prove it. Cyclic trapezium, that is a cyclic quadrilateral. What is a cyclic quadrilateral? A quadrilateral जिसका vertices, points will be lying on the circumference of the circle is a cyclic quadrilateral. So cyclic trapezium है यहाँ पे. So first thing that we'll do is draw a circle. Trapezium है, so trapezium में one pair of opposite sides are parallel and remaining are non-parallel. So one pair of opposite sides parallel होगा and another pair non-parallel. Okay, so first we'll name it A, B, C, D. जो भी नेम करना है करेक्ट ऑर्डर में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पूरा सर्कल कंप्लीट करो. ठीक है, सो आई हैव नेम्ड इट A, B, C, D. I am taking AB parallel to DC. Okay, trapezium है तो one pair of opposite sides will be parallel and another pair non-parallel. The non-parallel sides are equal and the diagonals are also equal. Prove it. We need to prove non-parallel sides, that is AD and BC, are equal. Okay. First we need to prove this. Second, diagonals are also equal. So diagonals को join करेंगे. So join AC and BD. ठीक है. So you need to show AC is equal to BD. ये दो प्रूव करना है. बहुत ही easy है students. We have already solved question 2 and question 4. But that was little difficult, tricky method था. This is very very easy, extremely easy. Okay, so over here trapezium है, one pair of opposite sides parallel है, तो पहले given लिखेंगे. ठीक है, first I'll write down given and to prove part and then we'll see how to solve. Okay, so quadrilateral ABCD is a cyclic trapezium. AB is parallel to DC. Okay, ये सब दिया नहीं है, you have to write it down because which pair of sides you are considering as parallel वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, so this is the given information. You need to prove AD equal to BC, that is non-parallel sides are equal and diagonals are equal, that is AC is equal to BD. Okay, so how are we going to prove it? पहले देखते हैं कैसे प्रूव करना है and then we will solve with proper steps. Okay, so over here what we'll do is we'll consider triangle ADC and triangle BCD. ADC and BCD. Okay, we need to show that AD is equal to BC, first part. Also second part we need to show AC is equal to BD. So for this, if we prove that these two triangles are congruent, अगर ये दो triangles congruent है, ये prove कर दिया, then by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, I can say that ADBC equal है, ACBD equal है. So what I need to do is I need to prove these two triangles congruent. कैसे? BCDC is the common side, right? This is the common side. So I have one thing, BC है मेरे पास. What else? DAC and DBC. This chord or this arc, okay, ये arc consider करो या ये chord consider करो, it is subtending this angle DAC on the circumference and this same chord is subtending angle DBC on the circumference.
सो ये जो कॉर्ड है या ये आप कंसिडर करो, ओके, वॉट एवर, इट इज सबटेंडिंग DAC and this same chord or this same arc is subtending angle DBC, दोनों circumference पे. So DAC DBC are the angles of the same segment. ये DAC and DBC ये major segment का angles हो गया, right? So दोनों ही angles equal होगा, angles of the same segment. So DAC DBC will be equal. Now I have angle, यहाँ पे एक side है. If I show angle ADC and angle BCD equal है, then by angle side test, that is AAS test, I can say the two triangles are congruent. So I need to show angle ADC and angle BCD equal है, right? I have two things over here. So अभी ADC and BCD को equal prove करना है. Let's see how. Now ये डायगोनल्स को मैं अभी के लिए इरेज कर रही हूं, ठीक है. इफ यू कंसिडर दिस ट्रेपीजियम, नाउ दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. सो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो एंगल BAD एंड एंगल BCD दोनों का सम विल बी 180 डिग्री. एंगल BAD plus angle BCD, opposite angles of the cyclic quadrilateral are supplementary, right? So ये angle and ये angle दोनों का sum is 180 degree. All right. Now I know these two lines are parallel. AB and DC parallel है. This is the transversal. So ये क्या form हो रहा है? C form हो रहा है. AB DC दोनों पैरेलल है. को इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल एंड ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं. सो दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. सो एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल BAD प्लस एंगल ADC is 180 degree because they are co-interior angles. And यहाँ पे क्या है? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, right? So BAD plus BCD is 180. BAD plus ADC is 180. In short, I can say BCD and ADC दोनों equal है, right? All you need to do is इसको यहाँ पे shift करो. तो शिफ्ट कर दिया तो क्या मिलेगा? एंगल BCD इज 180 माइनस एंगल BAD. सेम वे एंगल ADC इज 180 माइनस एंगल BAD. करेक्ट. सो RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा. सो BCD एंड ADC दोनों एंगल्स इक्वल होगा. दिस एंगल एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्कल यूज किया, मैं क्रॉस ले लेती हूँ, ठीक है. ADC एंड BCD दोनों इक्वल होगा. एंगल साइड. So AAS test say I can say the two triangles are congruent. Once the triangles are congruent, corresponding paths will also be congruent. तो corresponding paths कौन सा हो जाएगा? AD and BC both will be equal by CPCT. Same way AC and BD equal होगा by CPCT. Okay, so very easy. All you have to do is prove the two triangles congruent. So let us solve now with proper steps. So first you will draw the figure and then write down the given and to prove part. So starting with the proof. First we will show that angle DAC and DBC दोनों equal है. So angle DAC is equal to angle DBC, angles of the same segment. पूरा लिखना है. I'm not writing it down. You have to write down the full reason. Okay. Mark this as 1.
वी नीड टू शो ट्राइंगल ADC एंड BCD आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो ये दो एंगल्स मिल गया है, DC तो कॉमन साइड है, वी नीड टू शो एंगल ADC एंड एंगल BCD इक्वल है। फॉर दैट फर्स्ट वील कंसिडर BAD प्लस BCD, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। सो राइट डाउन quadrilateral ABCD is a cyclic trapezium given, so opposite angles, angle BAD plus angle BCD is 180 degree। पूरा रीजन लिखना है, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, okay। So angle BCD is 180 minus angle BAD. Mark this as 2. BCD I got as 180 minus angle BAD. अब angle ADC and angle BAD दोनों का सम कितना होगा? It will be 180 degree. Why? Because they are forming co-interior angles. ये BAD and ADC, it is forming C. Okay, co-interior angles. So write down AB is parallel to DC given, so angle BAD plus angle ADC is 180 degree co-interior angles. So again I can say ADC is 180 minus angle BAD. Okay, mark this as 3. From 2 and 3 you can say RHS equal है, तो LHS भी equal होगा। So from 2 and 3 angle BCD is equal to angle ADC। ADC BCD दोनों equal है। I have angle DAC and DBC, वो भी equal है, and DC is the common side. So now I can say the two triangles are congruent by AAS test. Okay, so mark this as 4. So this will be required, DAC and DBC and BCD and ADC, and DC तो common side है। So in triangle ADC and triangle BCD, ADC BCD, ADC, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, दूसरा वाला सेम ड्रॉ करो, ओके, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। सो ADC के साथ BCD ही नेम करना है या कैसे नेम करना है? सो ऑलवेज नेम इट करेक्टली सो दैट यू कैन फाइंड आउट द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स करेक्टली, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो एंगल DAC के साथ DBC इक्वल है, राइट। सो DAC एंड DBC आर इक्वल, सो A के साथ B इक्वल है, बेसिकली एंगल A के साथ एंगल B यहाँ पे इक्वल है, राइट। व्हाट एल्स? ADC इज इक्वल टू BCD, एंगल C एंड एंगल D, एंगल C एंड एंगल D, तो यहाँ पे एंगल D है, यहाँ पे एंगल C आएगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग कौन सा बच गया? D, राइट। सो ADC पहले ड्रॉ कर लिया, देन BCD में ड्रॉ करो और फिर बातें अकॉर्डिंग टू द करेस्पॉन्डेंस उसको नेम करो, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के हिसाब से। सो इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो नाउ यू कैन से AD एंड BC करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, राइट, AC एंड BD करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इक्वल हो जाएगा वंस द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो DC एंड CD दोनों इक्वल होगा, सेम सेगमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो लेंथ इज गोइंग टू बी सेम, सो बाय AAS टेस्ट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो लेट्स प्रूव इट नाउ। एंगल DAC is equal to angle DBC. So I'm talking about naming over here. DAC and DBC की जगह पे CBD should be the correct naming. Correct naming CBD होगा, not DBC, according to the corresponding points.
So from 1, right, we had proved. Now next angle ADC is equal to angle BCD from 4, considering this, right? So last, DC is equal to DC, common side. So therefore triangle ADC is congruent to triangle BCD by AAS test for congruency. पूरा लिखना है students, I am not writing, पूरा लिखना है, no short forms, ठीक है, except for this. So I can say AD is equal to BC, corresponding sides. AD is equal to BC by CPCT. And also I can say AC is equal to BD, again CPCT. दोनों बॉक्स कर दो, we have proved it. Okay, so write down, therefore AD is equal to BC, that is the non-parallel sides are equal, and second, AC is equal to BD, the diagonals are equal in a cyclic trapezium, ठीक है, या तो एंड में ऐड करो या फिर बिगनिंग में ऐड करो. इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम द डायगोनल्स आर इक्वल. ऑल राइट, लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4. If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, prove that first part its other two sides are equal, second part its diagonals are equal. It is same as question number 2, थोड़ा modify करके पूछा है. So if two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, so again there is a cyclic quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. We know that in a trapezium one pair of opposite sides are parallel and the other pair are non-parallel. So वही हो गया, there is a circle and a trapezium. Only thing is they have not told you that it is a trapezium. They have told you if two sides of a cyclic quadrilateral are parallel. So draw the cyclic quadrilateral. The vertices, that is A, B, C, D, will be lying on the circumference of the circle. Okay, make sure you name it correctly. Okay, clockwise और anti-clockwise जैसे भी नेम करो, पूरा सर्कल में कंप्लीट, ठीक है. A, B, C, D ऐसे नेम नहीं करना है. So if two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, I'll take AB parallel to DC, just like in question number 2. Okay, and ADBC non-parallel sides होगा. Prove that first part its other two sides are equal. You need to prove AD and BC equal, and its diagonals are equal, that is AC and BD equal. So you have to prove the same thing, same figure है. Only thing is, instead of writing it as cyclic trapezium, they have given as cyclic quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel. Okay, so I'll just show you what given you will write down, and to prove part, proof same होगा, same to same होगा. Only thing is, beginning में we wrote quadrilateral ABCD is a cyclic trapezium. Instead of writing it as cyclic trapezium, you write down cyclic quadrilateral. Okay, so given quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. All right, and AB is parallel to DC. So यही लिखना है. And to prove, again it will be same as the previous question, that is question number 2. You need to prove other two sides are equal, that is AD and BC equal, and second part diagonals are equal, that is AC is equal to BD.
तो सेम वे में सॉल्व करना है. कंसिडर ट्रायंगल ADC BCD, दोनों को इक्वल प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, एंड देन बाय CPCT ADBC इक्वल होगा एंड ACBD इक्वल होगा. ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द प्रूफ. So the only difference will be in the statement. Instead of writing it as cyclic trapezium, you have to write down cyclic quadrilateral, where AB is parallel to DC. Alright, so proof will be same as that in question number 2.